students, today the topic which we are going to start is integumentary system. Before starting today's topic, I would like to ask one question, that name the organ or name the largest organ of your body. You can pause your video here and you can write down the answer in comment box. Till then, please watch my video for today. Today's topic is integumentary system. Now, integumentary system consists of two parts. One is skin and the skin derivatives. Skin and skin derivatives. Now, skin consists of two parts. One is epidermis and the another one is dermis. Epidermis is divided into three parts. So let's divide them into three parts. First is stratum corneum or cornified layer. The second is stratum granulosum or granular layer. And the third is stratum germinativum or Malpighian layer. Germinativum or Malpighian layer. And dermis is divided into two parts, that is reticular region and the second part is papillary region. Skin derivatives includes hair, nail, horns, sebaceous gland, that is oil gland, and sweat gland. Okay, so let's discuss about stratum corneum and stratum granulosum first. So I will rub this part and I will draw a small structure of skin. Skin consists of two parts. The outermost layer of skin is made up of 25 to 30 cells. So I will draw it like this. These are the 25 to 30 layer of stratum corneum made up of squamous epithelial tissue. So this part is part 1, stratum corneum. Now stratum corneum, how many layers are there? It is approximately 25 to 30 rows. These are the dead cells. They consist of a protein that is called keratin protein. Keratin is waterproof protein. So it keeps our skin waterproof. ऐसे तो नहीं होता ना कि हम नहाते हैं और पूरे गीले हो जाएंगे, फिर हमारी मम्मी हमको धूप में बैठ के सुखाएगी. It's not like that. कैसे होता है कि हम नहाते हैं तो थोड़ी स्किन वेट होती है, आराम से वो ड्राई हो जाती है. Okay, because our skin consists of keratin layer which is waterproof. Now, what happens actually? This stratum corneum consists of keratin, which keratin is produced in granulosum layer के अंदर बनता है. धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे स्किन डेड होते जाती है, stratum corneum ऊपर जाएगा, keratin नीचे से और ऊपर आएगा. stratum corneum ऊपर जाएगा, फिर keratin नीचे से आएगा. ये stratum corneum शेड हो जाएगा, डेड स्किन है, नीचे गिर जाएगी, फिर केराटिन ऊपर आएगा और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम? स्ट्रेटम कॉर्नियम का फंक्शन क्या है? देखिए, नंबर 1, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज. It doesn't allow bacteria and other germs to enter in your body. यानी कि माइक्रोबियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. नंबर 3, इट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये वाटरप्रूफ लेयर बनी होती है तो बॉडी से और स्किन से अननेसेसरी ये डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा. द सेकेंड लेयर विच कंसिस्ट ऑफ
stratum granulosum, this is a thin layer और ये हार्डली 4 to 5 लेयर्स से मिलकर बनी होती है. So let's draw the another set of layer. ये so ये फ्लैट लेयर्स होती है. The nucleus of these layers are in a different stage because they keep on shifting towards the conified layer. ये डिवाइड होके ऊपर की तरफ जाते रहते हैं. What is the main function of stratum granulosum? इनका मेन फंक्शन है to produce केराटिन, जो केराटिन प्रोड्यूस करते हैं. The third layer is germinativum. Stratum germinativum is also known as Malpighian layer, and let's label it. This is granulosum or granular layer. Okay. The third layer is again made up of multiple layer. And this is the only layer which have the capacity to divide, जो divide करने की capacity रखती है. That's why it is known as stratum germinativum. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? Stratum germinativum बोलते हैं. Now the cells of this region divide and shift the cells towards the epidermis, यानी कि ये यहाँ से ही cell divide होकर granular layer में जाएंगी, यहीं से cells divide होके कॉर्नियम में जाएंगे और यहीं से सेल डिवाइड होकर नीचे आएंगे डर्मिस में, which will help in the formation of dermis as well as all the skin derivatives, hair, horns, nail और everything, ये सब कुछ बनाने में help करेंगे. So this is only a layer which have the ability to divide. Okay, so cell division is possible here. This is the only layer which is living. One important thing, epidermis does not consist of blood capillaries. epidermis के ऊपर blood capillaries नहीं होती है. देखिए मैंने ऐसे किया, यहाँ से blood नहीं बाहर आएगा. जब डीपन कट होता है, जब डर्मिस में डैमेज होता है, तब हमारे स्किन से ब्लड आता है. ओके, सेल डिवीजन हो सकता है. यहाँ पे लिविंग होते हैं सेल्स. दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट. नाउ व्हाट इज मेलानिन पिगमेंट? which is responsible for the skin color. So this only I want to discuss for today. In tomorrow video we are going to discuss about dermis. Till then, take care. Goodbye.